हाय एवरीवन, माई सेल्फ रमन शर्मा एज एन IELTS ट्रेनर और आज शुरू करने वाला हूं एक नया टास्क, मतलब स्पीकिंग कंडक्ट करने वाला हूं। मेरी एक स्टूडेंट जिसका नेम है रमनीक कौर फ्रॉम पटना, शी इज सो ब्रिलियंट और आज हम करने वाले हैं स्पीकिंग का जस्ट ओनली इंट्रोडक्टरी पैटर्न, ओनली टास्क 1। और एक आपको मैं टारगेट देता हूं, अगर आप वीडियो को 5000 लाइक के प्लस लेके जाते हो तो डेफिनेटली 5000 कमेंट्स में से, लाइक्स तो छोड़ो, अब लाइक्स की बात छोड़ो, 5000 या जितने भी कमेंट्स होंगे उनमें से मैं आपको 3 स्टूडेंट को रिप्लाई करूंगा और जिनको 1 मंथ IELTS का कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जिनके कमेंट्स मुझे अच्छे लगे या रैंडमली कोई भी उठा लेंगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इंट्रोडक्टरी पैटर्न कैसा लगा। और कोई भी रैंडमली 3 लकी विनर्स होंगे जो मेरी क्लास को 1 मंथ के लिए अटेंड करेंगे और विदाउट एनी कॉस्ट। आज की स्पीकिंग में मैं रैंडमली क्वेश्चंस को उठाऊंगा और डेफिनेटली आपको ये नहीं होगा कि किसी एक टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस मैं पुट आउट करूंगा, कभी कौन सा टॉपिक, कभी कौन सा टॉपिक, कभी कौन सा टॉपिक। और टास्क 1 के 2 बैंड होते हैं और आइए प्रिपेयर करते हैं हमारा टास्क 1। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो टू माय क्लास। थैंक यू सो मच। So this is the time I am going to call my student named Ramneek. Ramneek, please come in. May I come in, sir? Yes, please come in. Have a seat, please. Thank you, sir. So as I already told you guys, आज हम करने वाले हैं just only task 1 speaking का और ये best होने वाला है, randomly होने वाला है। So Ramneek, are you ready for this? Yes, sir. That's so nice for you. So Ramneek, I'm going to talk few questions. Very fine? Yes, sir. That's task 1. May I know your full name? My name is Raman. From where are you? I am basically from Patna, district Patiala. Describe your hometown. My hometown is a small town, but and now there is on main highways, and it is also of big branded shops and also many hotels or restaurants. Very fine. Describe your home. My home is located near a village, and my home is double story. We are having. That's fine. So how many rooms are there? In my home there are total 5 rooms, 2 bedrooms, 1 kitchen, and 1 washroom. Okay. Do you grow plants? Yes, definitely I grow plants and my outside my home in the garden. Okay. Do you text messages to people? If there any need, I text messages to my friends or cousins. Okay. Do you love to go on picnic? Yes, I wish I want to go to the picnic with my friends and family in my vacation or in free time. Let me explain. Do you use pen or pencil? Mostly I use pencil because pencil we can erase our mistakes. With pen we can. Okay, that's fine. Do you have any lucky number and why? My lucky number is 4. Many of the times, if the last digit of the number is 4, I get many coupons or many great awards from that. That's fine. Do you love running? Yes, I love running from my childhood. I also participate in athletes also. Okay. So have you any patience? Do you have patience? No. Or are you a hurry person? No, I am not having a patience because always I am ready to know what's going on or what is gonna do. Okay. Do you plan? Do you plan things means? Before settling anything, I plan that what, where, and on what time, and how I have to do the work. Okay. Do you celebrate festivals? Yes, in my country, all the people celebrate festivals, and me and my family also celebrate different types of festivals of all religions. Any of the color that you love most? Mostly I love blue and navy blue, black and navy blue color. It suits me a lot and it also increase my personality more. Do you watch movies? No, I am not interested to see movies. Any of the favorite singer? My favorite singer is Ajit Singh because it has having a great voice, and also
his many of the songs are so heart touching. Okay. Describe the nature of your father. My father's nature is so strict, but for me, he is so loving, and he also shares everything with me about the shop or anything gonna to be done in our home or. Okay. village. Are you fashion aholic person? Do you follow fashion? According to the situation, I follow the fashions, but many of the times I do not follow. Do you love to shopping? With my friends, I love to do shopping. Okay. Don't you think that means doing a shopping is just a waste of time and money? Many of the times, if our family conditions are not well, then I don't like to do shopping. But if any occasion is coming or any party, then I mostly do. Any of the problem you faced in this lockdown? Between this lockdown, all the people are facing many types of problems, because all the people are who are also the rich people or poor people. They are not even taking earning any type of money, because they are staying at home freely, and many people facing the problem main of What you learned from the corona pandemic? to stay safe, to stay at home only, and to talk with anyone between a place. Do you take any kind of the precautions to save yourself? To save myself, I can say that I can wash my hands before 5 to 10 minutes in between regularly, and while talking to anybody, we can Make a distance. make a distance of 2 feet or 1 feet. That's very fine. I just asked the randomly questions from her. Means मैंने एक टॉपिक को नहीं उठाया, कभी कौन सा कभी कौन सा कभी कौन सा. She's a kid और वो अभी स्टूडेंट है, और मैं चाहता हूं कि एक बच्चे को कितना अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, और मैं चाहता हूं कि उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो. इसीलिए मैं उसका वीडियो बनाया, उसका बूस्ट किया, और वो भी चाहती थी कि मैं सर आपके साथ स्पीकिंग कंडक्ट करूं. तो डेफिनेटली एक दो जगह पे, क्योंकि बच्चा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक करता है, तो नो वरी अबाउट दिस. मैन इज अ एरर, एवरीवन नोज अबाउट दैट ना. मगर आई रियली लव उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, और आई रियली बूस्ट हर. और एक दिन आपके सामने ये लड़की कम से कम 8+ स्पीकिंग में लेके आएगी, और जब एग्जाम होगे तो मैं आपको इसका वीडियो भी अपलोड करूंगा. सो आपको ये रैंडमली क्वेश्चंस कैसे लगे? देखो कितनी टाइप्स के, जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पता थे. मतलब टास्क 1 में आउट ऑफ टॉपिक कुछ भी नहीं होता है. तो डेफिनेटली आपको वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. सो लाइक मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, जो 3 बेस्ट हमें कमेंट्स लगेंगे तो हम उनको 1 मंथ का, मतलब हमारा आइल्स का जो 5000 रुपीज का कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. आप वेट कीजिए, किसी भी 3 कमेंट्स के नीचे मेरा खुद का रिप्लाई आएगा, तो डेफिनेटली आपको मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी देने वाला हूं. सो थैंक यू वेरी मच. आप वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लव यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, और कोरोना से बचिए. थैंक यू सो मच.